dear student, welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 5, in which we will study the kinetic energy and potential energy of the particle which is executing the simple harmonic motion. Myself, Shailesh Jaiswal, Assistant Professor, Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So in our previous lectures, we studied how the particle performing the simple harmonic motion. Then we also studied about this motion, and from that motion we study its displacement, velocity, acceleration. We have to find out its differential equation. By using this differential equation, we find out its velocity, acceleration, displacement, and also find out the velocity and acceleration by using the displacement equation. So up to that we studied the velocity, displacement, acceleration of the particle which is performing the simple harmonic motion. Now in that lecture, here we'll study about the kinetic energy and potential energy and total energy of the particle which performing the simple harmonic motion, linear simple harmonic motion. Okay, so for that we consider the spring mass, or also we consider the oscillatory bodies, any oscillatory bodies, for example a pendulum. Okay, so in that situation, if we pull this mass m and then release, this particle performing the simple harmonic motion, to and fro motion along its mean position. If we pull this mass toward the right side, then we do the displace this mass in that direction. Okay, we displace this mass in that direction. Here we represent the displacement x. So at the same time, the restoring force F is stored in the spring at opposite direction, and K is the force constant. Okay, and then when we release, then it performing the simple harmonic motion, linear simple harmonic motion along its mean position. So at extreme position, we know its velocity is zero. Velocity is zero, and displacement is maximum. Okay, at mean position, its velocity is maximum and displacement is zero. Okay, so so from that situation, here we find out that's kinetic energy. We know the formula for the kinetic energy is equals to half mv square. M is a mass, v is a velocity. Okay, so therefore kinetic energy is equals to half m. We put the value of v in this equation. So square of this equation, omega square a square minus x square. Okay, so therefore we get kinetic energy is equals to half m omega square a square minus x square, or we know the value of k is equals to m omega square. So put the value of k here. Therefore kinetic energy is equals to half k a square minus x square. Okay, half k square minus x square. So this is the expression for the kinetic energy of the particle executing the simple harmonic motion. So at here we get two conditions, at a mean position and extreme position. We have to find out its kinetic energy. So at extreme position, we know the displacement x is plus minus a and velocity is 0. Okay, displacement is plus minus a and velocity is 0. So its kinetic energy therefore its kinetic energy at extreme position is, we put the value of a here. So a plus minus a plus a square is also a square, and minus a square is also a square. So if you put here a square is 0. So its kinetic energy becomes 0 at extreme position. So now we find the kinetic energy at mean position. At mean position, okay, you have to take
the pendulum for better understanding. Okay, this is the extreme position, this is the mean position. At extreme position, the particle stop at instantaneous. This is at a small amount of time, instantaneously. So that here we find out its instantaneous velocity. Okay, and so for that instantaneous velocity, here we find the kinetic energy. So at extreme position, the velocity is 0, displacement is maximum. At mean position, displacement is 0, velocity is maximum. Okay, so at mean position here, x equals to 0 and velocity is maximum. So for maximum velocity, we find its kinetic energy half k. Here we put x equals to 0, we get a square, remaining a square. So at extreme position, the kinetic energy is 0. At mean position, is kinetic energy is half k a square. So this is a basic kinetic energy equation. Okay. So now this is a equation of kinetic energy, half k a square minus x square. Now we find the potential energy of the particle executing the simple harmonic motion. So here, let's consider once again spring mass system. This is a spring, okay, and the particle which is attached to the spring at one end, and the one end of the spring is attached to the rigid support. Now this is the mean position. This is the mean position. Now we displace, okay, we displace this particle. In second situation, we displace this particle, okay, with a small distance. We displace this particle with a small distance. Small distance dx. Okay, small distance dx. So what happened here? The restoring force F is stored in that spring. Okay, अब यहाँ पे अगर मैं इस मास को पुल कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे वर्क डन कर रहा हूँ. ओके, तो वर्क डन करने से मतलब ये स्प्रिंग इस मास को पकड़ के पुल करने से, उधर डिस्प्लेस करने से मैं यहाँ पे वर्क डन कर रहा हूँ. ठीक है, और यही वर्क डन स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Always we see in this mechanics, the work done is always stored in the form of potential energy, or you know, the work done is nothing but the force into displacement. We apply the force and the body is displaced. Okay, लेकिन यहाँ पे जो है रिस्टोरिंग फोर्स हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको, इस बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश ये फोर्स ही करता है. अगर हम रिलीज करते तो ये हमारी जो स्टडी है वो रिलीज होने की बात की है. अगर हम उसको रिलीज कर दे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस मास को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो इसीलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे लेंगे. देयरफॉर वर्क डन, smallest work done for smallest displacement. Okay, और we displace infinitesimal small displacement हमने लिया है dx. ठीक है, अब पूरा जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेते हैं तो वो लेते हैं x. पूरा डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे लेना नहीं है. फिलहाल हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, जिसको बोल रहे हैं dx. पूरा डिस्प्लेसमेंट x है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx ले रहा है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगा उसके अंदर में, और छोटे से रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन होगा. ठीक है, सो देयरफॉर दिस वर्क डन dw. सो फॉर स्मॉलेस्ट वर्क डन हियर वी कैन राइट dw. सो dw इज इक्वल्स टू, you know, the work done is nothing but force into displacement. So dw equals to f into dx. Okay, f into dx, and we know that this force f equals to minus kx. K is a force constant, x is a displacement. Okay, x is a displacement, and for negatives and negative, force and displacement are in the opposite direction. F is a restoring force. अब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है
वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है, आफ्टर रिलीजिंग दिस मास रिस्टोरिंग फोर्स, और वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो यहाँ पे वर्क डन रहेगा वो निगेटिव रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dw माइनस एफ इंटू dx। निगेटिव इसलिए कि जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा क्या रहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द डिस्प्लेस द बॉडी इज ऑलवेज मूव toward the direction where we apply the force। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी छोड़ने के बाद उसको बॉडी जब रिलीज करते हैं तो जो उसको ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इसी की वजह से हम यहाँ पे जो वर्क डन है वो निगेटिव ले रहा है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में बता रहा है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे फिर से माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये छोटे से वर्क डन, मतलब इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था उसके लिए मैंने ये डी डब्ल्यू लिया था। अब मुझे पूरे बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना है, मतलब यहाँ पे 0 टू डी एक्स छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया था, पूरा डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 टू एक्स, मैंने बॉडी इधर पुल करके यहाँ तक का लेके गया था, फिर उसको रिलीज किया था। तो जो पूरा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 टू एक्स था, लेकिन ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे फिलहाल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया था dx, उसके लिए छोटा सा जो वर्क डन है वो है dw इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू dx, सो dw इक्वल्स टू माइनस माइनस kx इंटू dx, एफ की जगह मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, f इक्वल्स टू माइनस kx और dw इक्वल्स टू kx इंटू dx। अब मुझे पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू x, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x हियर, integration from 0 to x kx into dx, therefore w total work done, therefore total work done w is equals to k integration from 0 to x into x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट भी वही है x, पुट करने के बाद x स्क्वायर बाय 2 लाएगा माइनस उधर 0, तो मतलब रहेगा सीधा x स्क्वायर बाय 2, मतलब k इंटू x स्क्वायर बाय 2, therefore here the total work done, okay, so the amount this amount of work done is stored as potential energy। तो ये वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर होता है, मतलब जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ओके। सो वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैं अगर इस बॉडी को उधर डिस्प्लेस करूं, ठीक है, तो इस स्प्रिंग के अंदर में एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मतलब फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगाने पे क्या होगा कि जो डिस्प्लेस होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेस होता है वर्क डन, एंड दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा इधर रिलीज होने के बाद, जो कि उस बॉडी को उसके मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, और वो है फोर्स निगेटिव, इसलिए वर्क डन भी हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट वर्क डन यहाँ पे माइनस साइन मैंने दिया है, तो वो यहाँ का जो f इक्वल्स टू माइनस के पुट करने के बाद पॉजिटिव आया है, ठीक है। सो देयरफॉर वी गेट w इक्वल्स टू kx स्क्वायर बाय 2 और वी टेकन रिटन एज हाफ kx स्क्वायर, ओके। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, therefore we can write potential energy is equals to half kx square। So this is the equation of potential energy and this is equation of kinetic energy। So for total energy of the particle, so therefore total energy of a particle performing simple harmonic motion, the total energy we can write as TE is equals to kinetic energy plus potential energy। So here the kinetic energy can be written as half k a square minus x square,
हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, देखिए हाफ के, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये होगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ का प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ के स्क्वायर कैंसिल, वी गेट हाफ के ए स्क्वायर। देयरफॉर total energy of the particle executing the simple harmonic motion is half k a square. So this is a k is the force constant, a is a displacement. तो ये हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे फाइनली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं एक बताना चाहूंगा उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से वैरी होती है, वो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। कि अगर मान लीजिए कि ये सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेशन के लिए मैं स्प्रिंग मास या फिर सिंपल पेंडुलम पे ले सकता हूँ, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है या स्प्रिंग मास है, जो भी कुछ रहेगा, ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस तरीके से ऑसिलेशन को परफॉर्म कर रहा है, स्प्रिंग मास रखता तो इस तरीके से ऑसिलेशन परफॉर्म करता था, ठीक है। तो ये इस तरीके का ऑसिलेशन है। मैंने स्प्रिंग लो या बॉब लो, उसको मैंने अगर इसके मेन पोजीशन पे मैंने इधर लेके आया और मैंने रिलीज कर दिया, जैसे रिलीज करेगा इट परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन along its मेन पोजीशन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ग्राफ निकाल रहा हूँ, मैं ग्राफ निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस और एनर्जी, टोटल एनर्जी along y एक्सिस, मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब होगा क्या कि जैसे मैंने x एक्सिस से जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये पॉइंट पे मैंने प्लस ए बोल दिया और यहाँ पे मैंने माइनस ए बोल दिया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो कि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस है, इधर का माइनस है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या होगा कि जैसे ही बॉब को मेन पोजीशन से मैंने यहाँ तक का लेके आया और छोड़ दिया, मतलब जब मैं उसको यहाँ लाऊंगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी और जैसे रिलीज होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में होगा। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे वो मेन पोजीशन पे तक का आता है, जैसे वो मेन पोजीशन पे आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। फिर से उधर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर से इधर जाएगा, जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब मैं इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से निकाल रहा हूं, ठीक है। ये कर्व को मैं शो करूंगा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व। मतलब क्या कि यहां पे देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं, ये इसको मैं शो करूंगा काइनेटिक एनर्जी का कर्व। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेन पोजीशन पे ज्यादा रहती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो रहती है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी और मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। तो ये जो कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी का, इसके अपोजिट क्या होगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है वो इस तरीके से रहेगा। मतलब क्या होगा, ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है इसको बोलूंगा मैं मेन पोजीशन और ये हो गया एक्सट्रीम। ये जो कर्व है ये कर्व है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, सॉरी ये का पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो ये
एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा रहेगी, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये लार्जेस्ट बताया यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा रहेगी, मीन पोजीशन पे जीरो रहेगी। उसके अपोजिट काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे ज्यादा रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे जीरो रहेंगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरा रिवर्स है, ठीक है। तो इस तरीके का स्टडी हमने यहाँ पे किया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में, द पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।